Hello biology lovers. This video is for the chapter Excretory products and their elimination, class 11. So, what do you mean by excretion? What substance to be excreted? So, they are actually nitrogenous waste. What are nitrogenous waste? That may be ammonia, urea, uric acid, right? So elimination of metabolic waste products from animal body to regulate the composition of body fluids and tissue is excretion. Now the waste product include ammonia, uric acid, urea, carbon dioxide and some ions also, right? Now on the basis of excretory product, we divide animals into three categories. That is, if they excrete nitrogenous waste in form of ammonia, then they are termed as ammoniotelic. If the nitrogenous waste is urea, then ureotelic. And if the nitrogenous waste is uric acid, then it is uricotelism or telic, right? So I will tell you the difference between these three. It is in paragraph form, which is difficult to note down. So I am making it easy by showing this tabular form difference. Now ammoniotalism. The excretory waste is ammonia. नाम से पता चल रहा है. In ureotelism, the excretory waste is urea. And in uricotelism, the excretory waste is uric acid. Now, ammoniotelic animals ज़्यादातर कौन से होते हैं? Aquatic animals. Why? Because for the removal of ammonia, lot of water is required and it is highly toxic. So animals are not able to keep it for long. On the other hand, ureotelic animals need moderate amount of water and they are less toxic than ammonia, so it can be retained for some time. And uric acid mostly found in, uricotelism में कौन से animals आते हैं? Aves, that is birds. Because very less amount of water is needed and uric acid is least toxic than when we compare this with ammonia or urea, right? Now, ammonia is formed in liver cell by the deamination of amino acid. If you want to learn, please learn it. Urea is formed in liver by detoxification of ammonia. It means ammonia is formed inside our body, but it is actually detoxified into urea. And uric acid is formed mainly from the purines in liver cell. In insect, uric acid is formed in Malpighian tubule. ये अभी हम पढ़ेंगे भी बेटा. एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है वो डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग तरह का होता है. इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे. Well, इसका मतलब से ये नहीं है कि रिमूवल ऑफ दिस नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज ओनली एक्सक्रीशन. Now the excretory system do play another role, and what is that role? Which is called as osmoregulation. So listen to carefully. The regulation of solute movement and hence water movement is called osmoregulation, or we can say maintenance of salt water concentration in a steady state is called osmoregulation. Now कुछ animals जो होते हैं बच्चा वो osmoconformers होते हैं और कुछ osmoregulators होते हैं. What are osmoconformers? जो animal these animals cannot actively control the osmotic condition of the body fluid. वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, osmoconformers कहलाते हैं. And osmoregulators, these animals maintain an internal osmolality different from the surrounding medium in which they inhabit. Like for example, warm-blooded animals कौन से होते हैं? Which maintain their body temperature. And cold-blooded कौन से होते हैं? Which are not able to maintain their body temperature. So these are the classification between these. Now I am telling you here some animals and their excretory organs like flatworms, some annelids, phallochordates. Their excretory organ is flame cell, which is also called protonephridia. Earthworm and annelids, nephridia. Insects including cockroach, Malpighian tubule. Mammals, we know, kidney. Crustaceans like prawns, antennal gland or green gland. Here I had given diagram also. The first one is of flame cells, second one is of the nephridia and the third one is of Malpighian tubule. Kidney आपको पता है and green gland आप please एक बार देख लीजिएगा. Now human excretory system क्या main part है बेटा इसके? एक है kidney, दूसरा है इसका ureter, तीसरा है urinary bladder and the fourth one is urethra. I'm sure ये आपको बहुत अच्छे से पहले से पता है. Now मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी. Here you can see in the diagram the kidney produces urine,
द यूरेटर ट्रांसपोर्ट यूरिन टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर, ये बच्चा एक जनरल एक वो दे रखा है, urinary bladder temporarily stores urine and urethra transports urine out of the body. So these are the main part which whose main function are given here, so you can see that, right? But अब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे. This is another example, this diagram of this excretory system. Now kidney, they are a pair of bean shaped structure. You know what is bean? आप जैसे राजमा खाते हैं, that is bean. It is exactly the same structure. अगर आप राजमा को अभी आपके घर पे है तो प्लीज एक बार देखिए, उसमें बच्चा एक ब्लैक सा डॉट भी दिखाई दे रहा है, राइट? उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी अभी. नाउ कहाँ प्रेजेंट होता है? वन ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. योर दिस बैकबोन इज वर्टिब्रल कॉलम बिलो द डायफ्राम, राइट? पोजिशन बताइए. लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड लिटिल हायर देन द राइट किडनी. अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज सो, तो आंसर इज टू एक्लेमेटाइज अदर ऑर्गन. ह्यूमन किडनी का लेंथ होता है बच्चा 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ होता है 9 सेंटीमीटर एंड थिकनेस होता है 5 सेंटीमीटर ब्रेथ होता है, 9 सेंटीमीटर थिकनेस होता है. इसका जो आउटर सरफेस होता है बच्चा, दैट इज कॉन्वेक्स इन शेप, वाइल जो इनर होता है दैट इज कॉनकेव. ध्यान से देखिए एक बार किडनी को. In the concave depression, there is an opening called hilum, which I was telling you, that black part, which is actually hilum, through which blood vessels like renal artery, renal veins, nerves, lymphatic ducts, and ureters enter or leave the kidney. कहीं से तो एंट्री होंगी ना सब चीजों की, क्योंकि वहां पर भी तो सप्लाई करना है. So that region is called hilum. Hilum inside the kidney expands into a funnel-shaped area called renal pelvis. अगर आप डायग्राम देखें बच्चा, आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, मैं आगे दिखाऊंगी भी, but here I'm actually going through this just to explain you. Then we will see the diagram. इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको पोजीशन भी क्लियर हो जाएगा. Two distinct regions can be seen in the kidney. Outer part is called cortex and the inner part is called medulla. The cortical region जो है बच्चा, in that region Malpighian bodies are there, जिसका मेन काम क्या होता है? To filter waste product from the blood. The medulla portion contain the collecting duct of nephron and thus passes the urine to the pelvis of the kidney. Conical pyramid shaped masses of medulla, बीच में medulla के conical shape आपको दिखाई दे रहे हैं अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो, project into pelvis and are called as medullary pyramids. They form the major calyces and minor calyces. ये आप डायग्राम देखिए प्लीज. अभी मैंने आपको बताया रीनल कॉलम, इसको रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी भी बोलते हैं. बेस ऑफ रीनल पिरामिड, देखो डायग्राम में देखिए बच्चा. रीनल कैप्सूल, रीनल वर्ड इज यूज फॉर किडनी, राइट? रीनल पैपिले, रीनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट, रीनल मेडुला इनर पार्ट, जो भी बताया था. माइनर रीनल कैलिक्स, छोटे छोटे जो दे रखे. रीनल पेल्विस रीजन, लेफ्ट यूरेटर बिकॉज देर आर 2 किडनी, ये सिर्फ आपको एक दिखा रखा है. मेजर रीनल कैलिक्स, रीनल मेडुला, अंदर वाला पार्ट को हम मेडुला कहते हैं. इसका एक और डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ मैंने दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए प्लीज. कॉर्टिकल रीजन को डॉट से यहाँ दिखा रखा है. कैलिसिस जो मैं अभी आपको बता रही थी बच्चा, ध्यान से देखिए डायग्राम को प्लीज. माइनर कैलिसिस है, मेजर कैलिसिस है, राइट? छोटा एंड बड़ा साइज में, दिस इज द डिफरेंस. छोटा छोटा निकलकर एक बड़ा उसमें ओपन हो रहा है, जिसको हम मेजर कैलिसिस बोल रहे हैं. पैल्विक रीजन है, रीनल पेल्विस बोल रहे हैं, जो फाइनली ये जो कैलिसिस है ये ओपन हो रही है पेल्विस में. हाइलम, जिस रीजन से अभी मैंने बताया आपको सारा आर्टरीज एंड वेन्स और ये सब निकल रहा है. मेडुलरी पिरामिड, यू कैन सी मेडुलरी पिरामिड. So this is the diagram which you can see and I'm sure आपको थोड़ा समझ में आएगा. इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताती हूँ. Mammalian kidney are bean shaped reddish brown color with a tough fibrous connective tissue covering called renal capsule. Please याद रखिएगा, इसके चारों तरफ दिखाई दे रहा है कैप्सूल कवरिंग है, जैसे हम क्या बोलते हैं, जो फाइब्रस होता है, राइट? उसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं. Kidneys are located laterally on either side of the vertebral column. मैंने आपको बता दिया बच्चा, vertebral column जब हम पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगी कि लास्ट thoracic एंड थर्ड lumbar vertebrae के क्लोज होता है. अब ये thoracic और lumbar vertebrae क्या है, we will read this अब in this chapter locomotion and movement. उसके बाद आता है कि किडनी का मेजर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये बता चुकी हूँ कि बाहर का पोर्शन कैसा होता है, अंदर का पोर्शन कैसा होता है. इसके अलावा किडनी के अंदर बच्चा 1 million complex tubular structure होते हैं which are called as nephron. They are the functional unit of excretory system.
right? These nephrons are arranged in radiating fashion within the renal pyramid. अब देखिए डायग्राम में renal pyramid में होते हैं ये urine produced by each nephron empties into collecting duct, वो भी हम पढ़ेंगे. Then collecting duct passes through the papilla into the renal calyx. Now the renal calyx drain urine in the central cavity of renal pelvis. कैलिस के बाद pelvis, अभी आपने देखा यहाँ पर, right? अब हम इसका और पढ़ेंगे डिटेल. सबसे पहले अब आते हैं हम ureter. From each kidney arises a thin muscular tube called ureter. It emerges out from the hilum of each kidney. It is about 30 centimeter in length. Urine enters the ureter from the renal pelvis and is passed down to the ureter. These two tubes bring the urine towards and open into urinary bladder. ये clear है हमको? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा बच्चा. The obliquity of the opening prevents the backflow of urine. याद रखिएगा, backflow नहीं हो सकता urine का किसी भी condition में. Now urinary bladder. It is single sac-like structure in which urine is stored for some time before it is voided out. It is present in the pelvic region of the body. Both bladders and ureters are lined by transitional epithelium. Please याद रखने हैं हमको, क्योंकि हम अभी epithelium जब पढ़ेंगे बच्चा, तब हमें ये सब याद रखने पड़ेंगे. Which may be considerably stretched and do not get torn out even when bladder and ureter are completely filled with urine. ऐसा नहीं हो सकता कि वो फट जाए, टूट जाए. Not possible, क्योंकि वो layer ऐसी है. Well, opening of urinary bladder is controlled by sphincter. यहाँ पर भी bladder wall present होता है, made of circular muscles. In human, two sphincters are present. Internal sphincter, that is present inside, and outer sphincter, which is called external sphincter. These normally remain contracted and during micturition these relax to release urine. मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये जो walls हैं बच्चा, ये generally contracted state में रहती हैं, लेकिन micturition के during में ये relax हो जाती हैं. अब आगे चलते हैं urethra. Now the urinary bladder open to outside through a tube called urethra. It arises from the neck of the bladder and conducts urine to the outside of the body. In females, this tube is about 4 centimeter long and serves as a passage for urine only. While in males, it is a measure about 20 centimeter, याद रखिएगा, and function as a common passage for urine and spermatic fluid. In females, there are 3 openings, बच्चा. One is for urine, another is for this egg release or baby release, or the third one is for fecal matter. But in male, the sperm and the urine are from the common passage, right? याद रखिएगा please. A muscular sphincter keep the urethra closed except during voiding of urine. याद रखिएगा ये वाला चीज भी. हर जगह पे देखो wall present है, right? Now, the urethra leads to end of the penis in males and into vulva in females. ये भी याद रखना है. In male, the urethra has 3 parts. मेल में बच्चा 3 पार्ट हैं इसके, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस एंड पैनिली यूरेथ्रा रेस्पेक्टिवली. आपको इतना डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू. नाउ द पैसेज ऑफ दिस यूरिन इज नेफ्रॉन टू कलेक्टिंग डक्ट. प्लीज नोट डाउन, नेफ्रॉन टू कलेक्टिंग डक्ट, देन टू पैपिला, देन टू रीनल कैलिक्स, देन रीनल पेल्विस, देन यूरेटर्स, urinary bladder, urethra. I am repeating, nephron to collecting duct, to papillae, to renal calyx, to renal pelvis, ureters, urinary bladder and urethra. Now, the cortical part which is extending into medullary pyramid is called column of Bertini. बच्चा आप ये डायग्राम में देखिए प्लीज. कॉलम ऑफ बर्टिनी बहुत प्यारा हमारी बुक में दे रखा है, जो बहुत अच्छे से क्लियर है कि कॉर्टिकल पार्ट मेडुला के बीच बीच में जो जा रहा है, कॉलम्स बना रहा है, उसे हम कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं. एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन. नाउ किडनी जो ये नेफ्रॉन है बच्चा, ये भी 2 तरह का होता है. एक होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन और एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा मिक्ट्यूरेशन पार्ट को अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको दोबारा बताऊंगी. वेल, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्ट्यूरेशन and the neural mechanism causing it is called Micturition Reflex. समझ आ रहा है बच्चा आपको? What is micturition? That is voiding of urine.
And the neural mechanism, the brain part which is involved into this, is Micturition reflex. Now, this reflex initiated when receptors are there present in the wall of urinary bladder, get stimulated by the tension created due to stretching of wall. किसकी? Bladder की wall. मैं रिपीट कर रही हूँ कि रिफ्लेक्स जो इनिशिएट हो रहा है वो क्या कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेजेंट कुछ रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, वो जब स्टिमुलेट होते हैं, क्यों स्टिमुलेट हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लैडर वॉल. As the bladder gradually fills with urine brought it into it by the ureters, right? Now, in response, the stretch receptors on the wall of bladder send signal to CNS. Now, CNS passes to the motor messages to initiate the contraction of smooth muscles of bladder and simultaneously relaxation of urethral sphincter valve open hoga, causing the release of urine. So this is how micturition process takes place. This I will explain you in next video itself, क्योंकि ये दोबारा आएगा बच्चा, तब मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगी इसके बारे में. So this is all in this video. Please go through it, make notes, and we will discuss more. And if you want to comment anything, positive or negative, you are most welcome. Thank you so much, bacha.